नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली मां नर्मदा का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी मित्रगण साथियों का स्वागत है। आइए, हमारा जो है फ्लूइड मैकेनिक्स कंटिन्यू चल रहा था, उसे हम आगे की ओर प्रशस्त करते हैं। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। ये है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स 22 आईएएस मेंस। क्वेश्चन रहा स्क्रीन के ऊपर, ब्यूटीफुल सा, देखते हैं। अ फ्रांसिस इज a Francis turbine installation. The runner inlet is at a mean height of 2 meter from the tail race. In a Francis turbine installation, the runner inlet, the runner inlet is at a mean height of 2 meter from tail race. A draft tube is connected. A draft tube is connected at the outlet. The runner diameter is the runner diameter is 1.5 meter and runs at 375 rpm. The pressure at runner is 35 meter above atmosphere atmosphere while the pressure at exit is 2.2 meter below the atmosphere. The flow velocity at inlet the flow velocity at inlet is 9 meter per second. At output at output it is 7 meter per second. Available head is 62 meter. Available head is 62 meter. Hydraulic efficiency is 90%. Hydraulic efficiency is 90%. Determine the losses before the runner.
losses before the runner in the runner and in the runner and at exit। चलिए सॉल्यूशन देखने का प्रयास करते हैं हम। u1 क्या होता है? u1 होता है हमारा पाई टाइम्स डी एन वन डी वन एन बाई 60 मीन ब्लेड वेलोसिटी 29.45 मीटर पर सेकेंड। एफिशिएंसी इज इक्वल टू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हो जाएगा वी डब्ल्यू वन u1 upon g times h, which gives the value 0.9 vwn 29.45 division over the 9.81 multiply with 62. So here the whirling velocity is to be 18.59 meter per second. After this calculation we get the one gentle one. The whirling is less than the u1. Okay, so here the construction is to be made. Inlet velocity triangle. Here the u1 is the bigger one, whirling vw1. There is to be a v1, vr1 and vf1. The basic dimension are to be here. After that हम देखेंगे head। हेड की इक्वेशन हो जाएगी हमारी h1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z1 is equal to h2 plus v2 square upon 2g plus z2 plus hl, head loss. Alright, head loss up to the exit of the guide blade or entry to the runner. So 1 and 2 के बीच में हमने इक्वेशन लगा दी, इजी। नाउ इनलेट से जो है आपको एक रिजल्ट मिलेगा वेलोसिटी से, ट्राइंगल से, कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी स्क्वायर वी एफ वन का स्क्वायर प्लस वर्लिंग वन का स्क्वायर। सो वी वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 18.59 का स्क्वायर। सो हियर द वी वन वैल्यू इज टू बी 20.65 4 ms मीटर पर सेकेंड हमें प्राप्त हो जाएगा। नाउ आपको जो है हेड जो दिया हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में पुट ऑन कर देते हैं। कितना? 62 मीटर। हेड की वैल्यू दिया हुआ है ना, सो 62 विच इज 35 प्लस 2 प्लस इक्वेशन है 20.654 का स्क्वायर 2 इंटू 9.81 इक्वेशन में वैल्यू रख रहे हैं। सो हियर प्लस HL, सो HL अपना कितना कैलकुलेट होके आएगा? 3.26 मीटर। नाउ नेक्स्ट मूविंग अहेड h1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z1 इज इक्वल टू h2 प्लस z2 प्लस vw1 u1 चेंज हो गया अपॉन g प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g
प्लस HL2, इसे HL1 मान लेते हैं। नाउ रनर इनलेट एंड आउटलेट, ये है हमारा रनर इनलेट एंड आउटलेट के बीच में हमने इक्वेशन लगाई। सो हियर वी हैव द वैल्यूज ओवर हियर 35 प्लस V1 is equal to 20.654 square upon 2 into G is equal to 9.81 easy, H2 minus 2.2, Z2 1.7, then after that VW1 U1 over 9.81 plus 7 square upon 2 into 9.81 plus HL2. So after this हमारे पास एक रिजल्ट होता है। क्या? अगर हम आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल देखें तो क्या रिजल्ट होता है? Vf2 is equal to V2 is equal to 7 meter per second. Now here 35 plus 21.74 plus 2 is equal to minus 2.2, 1.7 plus 29.45, 18.59 divided by 2 HL2 plus 7 का square upon 2 times of 9.81. So the value of HL2 is to be 0.93 meter. चलिए, now further moving ahead, consider the draft tube DT. Consider the draft tube. So static head 1.7 meter, kinetic head 2.5 meter, total 4.2 meter we have. Now actual head at turbine exit, actual head at turbine exit is equal to 2.2 meter. So HL3 is equal to 2 meter. Now the total loss is equal to HL1 HL2 plus HL3. So value is to be 3.26 plus 0.93 plus 2, 6.2 meter.
10% of total head as hydraulic efficiency is equal to 90%. ठीक है, then the whole and soul is to be completed of this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूविंग अपार्ट करते हैं। ये बोल रहा है साथियों, a Kaplan turbine develops Kaplan turbine develops 2000 kilowatt at a head of 35 meter, at a head of 35 meter and at a rotational speed, and at a rotational speed of 420 rpm. The outer diameter of blade, the outer diameter of blade is 2.5 meter, and the hub diameter is and the hub diameter is 0.85 meter. If the overall efficiency is 85%, if the overall efficiency is 85% and the hydraulic efficiency is 80% and the hydraulic efficiency is 88%. Calculate the discharge. Calculate the discharge, the inlet flow angle, the inlet flow angle and the blade angle and the blade angle at the inlet. चलिए सॉल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। सबसे पहले हमारा हो जाएगा ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर em by rho g q h. Now q is equal to, we have 20 into 10 cube into 10 cube divided by
0.85 10 cube 9.81 into 35. So the discharge is equal to 68.67 meter cube per second. Okay, now we have Q is equal to pi by 4 d square minus dB square into flow velocity of 1, right? So the value of Q is equal to pi by 4 times of 2.5 square minus 0.85 square into VF1. So the VF1 value is to be calculated after this 15.82 meter per second. After VF1, what we have to calculate? U1, mean blade velocity. U1 is equal to pi times d times n over the 60, which is pi times of 2.5 into 420 upon 60. So here the value of mean blade velocity is to be 54.98 meter per second, and the hydraulic efficiency is equal to VW1 U1 upon G times H. So here 0.88 VW1 into 54.98 upon 9.81 into 35. So VW1 value is equal to 5.495 meter per second. Now, if we constructed our velocity triangle, okay, here it is the VW1 U1 alpha 1 and the beta 1. Here the value is to be V1, value is to be VF1 flow velocity, and the value is to be relative one VR1 inlet velocity triangle. यहाँ पे हमको एक रिजल्ट देखने को मिलता है whirling 1 is less than of U1. So result मिलेगा tan over the alpha 1 is equal to VF1 upon V W1. So putting the value after that, tan over alpha 1 is equal to 15.82 upon
5.495. Easy. So the value over tan over the beta 1 is equal to Vf1 upon U1 minus whirling at 1 Vw1. So the value over the beta 1 is equal to tan inverse flow velocity is 15.82 upon 54.98 minus 5.493. So here the beta 1 is to be calculated 17.73 degree. Right? Easy, right? Easy peasy. Got this. ओके, एक और छोटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन है, इन अ लो हेड हाइड्रो प्लांट, लो हेड हाइड्रो प्लांट, the total head is 7 meter, the total head is 7 meter, a draft tube is draft tube is used to recover a part of kinetic head, kinetic head if the velocity at the turbine, if the velocity at the turbine outlet, at the turbine outlet or the draft tube inlet is, or the draft tube inlet is 7 meter per second, and that at the outlet is, and that at the outlet is 5 meter per second, determine, क्या डिटरमाइन करना है, द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी. फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है
if the draft tube efficiency is 100%, if the draft tube efficiency is 100%, सेकेंड वन बोल रहा है if the draft tube efficiency is recover kinetic energy is 80%, if the draft tube efficiency to recover kinetic energy is 80%, and the third one, what will be the efficiency, what will be efficiency is all the exit, is all the exit velocity from the turbine is velocity from the turbine is all the exit velocity from all the exit velocity, all the exit velocity, what will be efficiency is all the exit velocity from the turbine is turbine is least. Assume that assume that there are no other laws. There are no other laws. चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये केसेस हैं हमारे पास। केस 1 में बोल रहा है efficiency of dt is equal to 100%। केस 2 में बोल रहा है efficiency dt 80%। केस 3 में बोल रहा है efficiency of dt is 0%। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब एट इनलेट, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक काइनेटिक हेड एट ड्राफ्ट ट्यूब
इनलेट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई with 9.81, which gives the value 2.5 meter. Kinetic head at draft tube आउटलेट पे बनाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 2 times of 9.81, so which gives the value 1.27 meter. Alright, now हेड रिकवर्ड कितना होगा हमारा 100% काइनेटिक हेड में? हेड recovered is equal to 2.5 minus 1.27 is equal to 1.23 meter. The maximum gain here, the maximum gain is equal to 1.23 meter. Maximum gain is equal to 1.23 meter. Then we have the loss. Loss कितना है? 2.5 minus 1.23 is equal to 1.27 meter. Now, dancing down the track, we have the efficiency of hydraulic 1, 7 minus 1.27 upon 7. So calculation after this 81.86%. Now for the second one, सेकेंड पार्ट बोल रहा है 80% ही आप रिकवर कर पा रहे हो. ऑन दैट नोट हमारा जो गेन आ रहा है विच इज 0.8 मल्टीप्लाई विद 2.5 minus 1.27 is equal to 0.984 meter. Now head lost is equal to 2.5 minus 0.984 1.516 meter. Efficiency of the hydraulic one 7 minus 1.27 upon 7, 78.34%. लास्ट पार्ट थर्ड वन, ड्राफ्ट ट्यूब का कोई चकल लसी नहीं है. ऑन दैट नोट रिकवरीज if no recovery is achieved,
So here the hydraulic efficiency is equal to 7 minus 2.5 upon 7, so which gives the value holy one 64.29%. इजी। चलिए इतना ही रखते हैं आपके सेशन को। आपको एक काम करना है, क्या, वीएम क्लास को हमारी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसे पेनिट्रेट करना है। ठीक है, आपका सेशन इतना ही रखते हैं। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। यह ईश्वर से हमारी कामना है। थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।